हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ जैसे कि दो प्रकार की है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं एक वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगा कि इसमें कि जो हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्या प्रॉब्लम के कारण क्या प्रॉब्लम बन रही है कि हमारा जो ब्लड है, जो हमारे ब्लड हम खाना खाते हैं उससे जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और वो एनर्जी जो है इंसुलिन हमारे बॉडी सेल को, ब्लड सेल को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ब्लड सेल को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण हमारा जो बॉडी है उसमें डिजीनेस, थोड़ी थकावट रहती है, और हमारा आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जो है ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, खाने के बाद एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी की ज़रूरत कैसे वो हम अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो मैंने इसी वीडियो में मैंने उस वीडियो के को अटैच भी करा है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। थैंक यू मेरे दोस्तों। आपने अगर किसी ने इस वीडियो को, इस मेरे चैनल को, हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको, उसके बारे में आप हमें बताएं, ताकि हम आपके उस विषय पर, उस इशू पर हम बात करें और उसका सॉल्यूशन आपको बताएं। तो मेरे दोस्तों, उसमें आपको आपके लिए बहुत ही आपको जागरूक करना चाहूँगा। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके लिए आपको जागरूक करना चाहूँगा कि आप जैसे कि छोटी मोटी भी हेल्थ रहती है, हम हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, उसके बारे में आप जागरूक रहें मेरे दोस्तों। तो ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड जो वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें। बहुत ही मैंने ढूंढ कर रिसर्च करके एक बहुत ही इस वीडियो में आप आसानी से समझ पाएंगे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कि जो क्या, किस तरह से वो हमारे हम उस वो जो ब्लड है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एनर्जी को, ग्लूकोज को वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है बॉडी सेल को एज ए एनर्जी फॉर्म में, वो What is प्रोवाइड नहीं कर पा रहा diabetes है। mellitus? Normally, after we eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for energy in our cells. To accomplish this, our pancreas needs to produce a hormone called insulin. Insulin is what facilitates the process of pulling sugar from the blood and putting it in the cells for use or energy. Diabetes mellitus occurs when insulin production is deficient. This results in a high level of blood sugar in the body. Without insulin in our body, glucose cannot enter the body's cells and is excreted through urine, which results in its loss. An increase in blood glucose concentration leads to loss of water in cells via osmosis to blood. To understand what happens in a diabetes patient, we need to understand what happens in the normal mechanism. Whenever the blood glucose level increases, the pancreas responds by secreting insulin. Insulin has two functions here. It converts glucose to glycogen and increases the metabolism of glucose in cells. This is how the glucose levels fall and the blood sugar level goes back to normal. The pancreas will secrete less insulin when the blood sugar level is low. It decreases the glucose metabolism and gives the chance for sugar level to increase and return the blood sugar level to normal. People with diabetes are having problems in their pancreas. It produces inefficient insulin, or none at all, halting its effectiveness to process of glucose. This causes blood sugar level to arise from the lack of glucose metabolism. Meanwhile, the rest of the cells are in need of the energy but are not supplied any. The cells' deprivation lead to wide problems in nearly every major body system. Types of diabetes. Diabetes has two main types, type 1 and type 2. Type 1, also called juvenile diabetes or insulin-dependent diabetes, is an immune system disorder. Our own immune system attacks the insulin-producing cells in the pancreas, destroying our body's ability to make insulin. With type 1 diabetes, one must take insulin to live. Most people are diagnosed as a child or young adult as if it is inherited. Its symptoms include frequent urination, thirst, fatigue, insulin shock, and diabetic coma. Insulin shock can be described as a feeling of dizziness, sweating, and paleness. Diabetic coma can be described as partial or complete loss of consciousness. Type 2 is related to insulin resistance. It is usually suffered by older people,
but lately, this type occurs more frequently in younger people. Obesity is the prime risk factor of type 2 diabetes. Type 2 diabetes is mostly a result of poor lifestyle, dietary, and exercise habits. Its symptoms include blurred vision and fatigue. Prolonged insulin resistance in type 2 diabetes